Hello students, in previous video we have started the revision of Unit 12, that is geometry, and we have revised about the properties of solids, that is cube, cuboid, cylinder, cone and sphere. And then we have revised about the lines, point, line segment, line and ray. So we revised that this dot represents a point and a straight path which have two endpoints is called line segment, and we can measure the length of the line segment. And then line is a straight path which extends endlessly in both the direction. That means it has arrow on both the sides, but in case of line segment there is no arrow on any end, and we can't measure the length of the line. And similarly in ray we have end on one side, and on other side it again extends endlessly in another one direction, right? इस डायरेक्शन में endlessly ये extend हो रही है और दूसरी साइड को end point है, and again we can't measure the length of a ray. Now today we will revise worksheet number 3, that is we have to identify following as line segment or a ray. So we can easily identify them, and then mark 3 points on the line segment AB, also name them. So point mark करके उनको name दिए, कुछ भी name दे सकते हैं आप. And then in the given line segment how many points are marked between XY. So XY के बीच में कितने points हैं? Count them, 1 2 3 4 5 6 7 points. P and B के between, P and B, so there is 1 2 3 points, right? Next is how many line segments are there in each of the following. So you have to count the number of line segments. So how many line segments are there in this figure? 1 2 3 4, right? And this 1 2 3 4 5 6 7, right? And in this 1 2 3 4, and this also, that is 5. And then name all the line segments in the following diagram. So in सारे line segments को name देना है, that is PS, PQ, QR, RS, right? Similarly here AD, DC, BC, AB, AC, जितने भी line segments हैं उन सबके name देने हैं. And look at the figure and name. So ये figure given है, इसमें आपको any 5 points के नाम देने हैं, कोई भी 5 points like F, B, C, D, E, A, कोई भी आप points के name देंगे. One line, so there is, you can see only one line. Line क्या होती है? जिसके दोनों sides पे arrow होते हैं और वो straight path होता है. You can see here, यहाँ पर ये bend हो रही है. This is not a straight path. So this is not a line. This is the only line. तो इस लाइन को आप नाम दे देंगे AD. क्या नेम देंगे? AD लाइन. Then two rays क्या होती है? जिसमें one side को end point होता है, दूसरी side को arrow होता है. So you can name the two rays. तो कोई भी two rays को आप नेम दे सकते हैं, like BE, right? और BG और G भी हो सकता है, क्योंकि one side को end point, दूसरी side को end point नहीं है, arrow है. और BE, right? These are the two rays. Two line segments जिसके दोनों साइड पे end points होगा. So you can write FB, right? और CB और BC. These are the two line segments. Now give any 2 examples of each of the following point examples or line segment. Next is measuring line segment. How we can measure the given line segment. So we have learned that we use scale, right? So 15 centimeter scale to measure the line segment, right? And how can we measure? हम जो ये हमारा starting first है, यहाँ पर हम अपना scale को first point पे रखेंगे. First line इसके साथ coincide करनी चाहिए. उसके बाद ये line के ऊपर हम चेक करेंगे जो एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का वो कहाँ पर आ रहा है. सो दैट इज ऑन 4. सो
what is the length of the given line segment? 4 centimeters. So in this way we can measure the length of the line segments. So this worksheet is based on this only, to measure the given line segments. And next is how to draw the line segments of given lengths. So let us do some questions based on it. Draw the line segments of following lengths. So given length की कोई line segment draw करेंगे and also name them. Suppose एक question लेते हैं 5 centimeter. So let us draw a line segment of 5 centimeter. Take a scale. Scale हमें पेज पे रखेंगे और हम एक पॉइंट मार्क करेंगे कहाँ पर? 0 पे, राइट? 0 से हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइन ड्रॉ करना. हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और कहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है? 5 सेंटीमीटर तक, राइट? यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर है. 5 सेंटीमीटर तक हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, यहाँ से 0 तक, राइट? ये और यहाँ पर 0 है. सो दिस इज द लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड वी ऑल्सो हैव टू नेम इट. तो इसको आप कुछ भी नेम्स दे सकते हैं, लाइक AB, XY, PQ, राइट? तो इसको मैंने नेम दे दिया XY, राइट? इस तरह से आप इसको नेम देंगे. एंड सपोज let us draw one more line segment of 9.3 centimeter, right? 9.3 centimeter. So how can we draw? Again हम सेंटीमीटर वाली साइड को लेंगे. एक साइड को आपके इंचेस हैं, दूसरी साइड को सेंटीमीटर. So, सेंटीमीटर वाली साइड लेंगे हम. So यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0, एंड हमें कहाँ जाना है? 9.3. फर्स्ट ऑफ ऑल 9, यहाँ पर है हमारा 9, और 9 से आगे हमें 3 जो स्मॉल लाइन से वो काउंट करने, 1 2 3. सो दैट इज 9.3. ये हमारा 9.3 हो गया. सो यहाँ से लेकर हमें यहाँ 0 तक लाइन ड्रॉ करनी है. सो दिस line segment is of 9.3 centimeter and now name it. Suppose PQ. हम कुछ भी इसको नेम दे सकते हैं. यहाँ पर आप एंड पॉइंट्स में पॉइंट मार्क कर लेंगे, राइट? नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स. यहाँ पर नेम आपको ऑलरेडी गिवन है, AB 3 सेंटीमीटर, MN 7.3 सेंटीमीटर. सो लेट अस ड्रॉ इट. सपोज आपको ऑलरेडी गिवन है नेम MN is equal to 7 centimeter. Now in this type of question what you have to do is draw a line segment. You have to draw a line segment of 7 centimeter. So हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 centimeter की लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. दिस इज 7. तो 7 centimeter की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हम जो नेम दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते. वाई? बिकॉज नेम इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में MN आपको ऑलरेडी गिवन है नेम. सो आपको यही नेम लिखना पड़ेगा, MN. आप अपनी मर्जी से लेटर्स नहीं चूज कर सकते. जैसे यहाँ पर था 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी थी एंड यू हैव टू नेम देम. सो इन सच केसेस आप अपनी मर्जी से कोई भी लेटर्स चूज करके नेम दे सकते थे. बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर नेम ऑलरेडी गिवन है, आप वही नेम देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, राइट? सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9.3 सेंटीमीटर, इसको आप 5 सेंटीमीटर, इसको आप 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट? सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ. एंड नेक्स्ट इज योर MCQs. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के ऊपर बेस्ड है बहुत MCQs. A sphere has dash plane surfaces. So how many plane surfaces does sphere has? So there is no plane surface. A cube has dash vertices. How many vertices are there in a cube? That is 8. All the faces of cube are, कौन सी शेप होती है क्यूब के फेसेस की? That is squares. बर्थडे कैप रिप्रेजेंट्स, कैसी होती है ये, किसको रिप्रेजेंट करती है? That is cone. Don't get confused in triangle and cone. It represents a cone. That is a solid shape. And next is your mathematics books. A textbook represents.
तो आपकी जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी सॉलिड शेप को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज क्यूबॉइड, राइट. सो these are the MCQs, and next is your again same type of question. Draw the line segment of the following lengths. आपको इन लेंस की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग शेप ऑफ क्यूबॉइड कोन, and then how many triangles are there in the given figure. So you have to count the number of triangles, how many squares are there, how many line segments are there. So इनको आपने काउंट करना है लाइन सेगमेंट्स को, राइट. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. ये तो आपको गिवन है 1 2 3, राइट, एंड यहाँ पर आपकी 3 लाइन सेगमेंट बन जाती है इसी से, राइट. एक तो पूरा डी से सी तक, एक डी से ई तक, एक ई से सी तक, 3 लाइन सेगमेंट बनती है इसमें, राइट. So we have completed the revision of all the units. So do practice of all the units, and in exams आप papers जो हैं वो आप अच्छे से करेंगे. So all the best for the exams. Thank you.